Now let's start your full mock for engineering services, and you are from electrical engineering background. So uh, just for introduce yourself first. Good afternoon, sir. My name is Shobna Singh Kurmi. I belong to district Jabalpur in Madhya Pradesh. I have completed my schooling from Jabalpur itself, and thereafter I have completed my graduation from Jabalpur Engineering College in 2019. After that, I have started doing MTech in Power Electronics and Drives from National Institute of Technology, Delhi, and recently I have completed it. Sir, my hobbies, I like to do painting in my free time. Okay. You did your MTech in power electronics and drive. You did your MTech na Yes, sir. in power electronics. Okay, what is the use of power electronics main in electrical engineering? So power electronics is basically used to control voltage, frequency, and it is required to control power. For example, if we take rectifiers to convert AC voltage to DC voltage, and we use rectifiers. We use inverters to convert the DC voltage to AC voltage. Like that, we use power electronic. Okay. Can we use this power electronics to control the reactive power? Yes, sir, we can use it. Where what is the utility of? Sir, it is FACTS devices that is used to control reactive power. So FACTS devices are basically flexible AC transmission devices that are connected in series or in shunt in AC lines to compensate a reactive power requirement like capacitive inductives. There are types of FACTS devices like series controllers, shunt controllers, series controllers, series shunt controllers. Okay, your first choice is CPWD. So my first choice is Central Power Engineering Service. But in form it is showing Central Electrical and Mechanical Engineering Service. And second is So second is Central Electrical and Mechanical Engineering Service. yes, okay, first one is your okay. So any specific reason of selecting CPES? Sir, I am comfortable with all domains that is given in engineering services, but there is requirement of preference, so I have filled that. And sir, power engineering service, I feel that I will get more opportunity to learn and to contribute in this. So that is why I have filled Central Power Engineering Services as my first choice. Okay, what was your BTech project? Sir, it was speed control of brushless DC motors using microcontrollers. Brushless DC motor. It was single phase or three phase? Sir, brushless DC motors that we have controlled with a inverter. Basically, we have made power supply system. अभी हमने have you seen brushless DC motors ceiling fan? No, sir, I have not seen that, but I have heard that it is used in ceiling fans. Okay. So what was your role in that project? Sir, majorly I have done a literature review and simulation part. Simulation. So which device you have used there to control the speed? Is that something like a pole change or is it something like voltage change? Sir, I have used basically inverters in MATLAB simulation. Inverter, MATLAB.
That was not the practical project. Sir. Only simulation. So simulation and hardware we have made, but my contribution is in simulation. Simulation. So what was the principle? It is that to control the voltage, or it is control the number of pole. Sir, basically, sir, we have done switching with the help of switches. We have rotated the motor. Switches में potential control कर रहे थे, or you are controlling voltage control, sir. PWM technique we have used. Okay. It is of the field circuit, or it is of the armature circuit? Sir, it is of, sir, in brushless DC motors, armature circuit windings are there in armature circuit. Therefore, we have used in that. Okay. Achha, what is the highest voltage level in India? Sir, as of now, it is 765 kV. 765 kV. What? AC or DC? Sir, it is AC voltage, 765 AC voltage. AC. Sir, as far as I'm not sure about that, sir. Okay. But what is the total generation capacity of India? Sir, as of August 2022, it is 405 gigawatts. Achha, have you heard about the solar sun? So solar grid, one of the statement given by our Prime Minister. Solar grid. Yes. Sir, I have not heard about it. Any idea what will be the solar grid? Sir, I have not heard about solar grid from PM. Okay. Tell me, Shobna, how decide the peak load plant and base load plant? So basically, the cost of generation and fuel and the cost of fuel decides it. Like for base load plants, like coal and nuclear power plants, we take it as base load power plants, and they provide power output at the steady state, means continuous power supply is there. And in peak load plants, we can take solar power plants which are intermittent, and depend on weather conditions. Okay. Tyagi sir? Yes, sir. हाँ, अब आप करिए सर. Okay, Sobna. Yes, sir. During your BTech, when you joined this electrical engineering, so what was the idea behind joining electrical engineering domain, especially? Sir, in 10th class, I've learned about basic electromagnetics in physics. I became curious to know how electricity is coming into our home. So that is why I thought to join electrical engineering as a course. So, what did you do to find out the solution of that question which raised in your mind that time? Sir, basically, anytime focus on that question. Yes, sir. So that is the generation, transmission, and distribution behind this. Sir, I have learned these aspects in electrical engineering. Okay.
So tell me, you have told me three things: generation, transmission, and distribution, right? Tell me the names of some organizations, okay, especially government organizations in all the three sectors. Yes, sir. Sir, in generation, sir, there is National Thermal Power Corporation, that is NTPC, and in transmission, PGCIL, that is Power Grid Corporation of India Limited, and discoms are mostly state-owned. Like in my state, there is a Madhya Pradesh power transmission company and distribution company. Okay, so there was a concept of smart city. Was Yes. there something related to electricity in that? Sir, we can say Objectives this. were decided, na? Sir, I'm not sure, but we can say this. Smart city, in a smart city, we have to provide uninterrupted power supply. To some extent, it is related to electricity also. Okay. So can you tell me the cost of, you belong to which city in Madhya Pradesh? Sir, in Jabalpur. Jabalpur. Okay, so what is the cost of electricity per unit there? Sir, it is around 5 to 6 rupees. 5 to 6 rupees. So it is in Jabalpur or all cities uniform? Sir, I'm not sure about that. Okay. Tell me the power rating of bulbs at your home. Do you use bulbs at your home? Yes, sir. So what is their power rating? Sir, this is LED bulbs and 7 to 9 watt ratings we use. So in power rating of a bulb, do we mention only power or something else also? The voltage rating is also mentioned. So, but you did not tell me that. Sir, it is You only told 230 me volts power. AC supply. Hmm? So it is 230 volt AC supply. 230 volt AC. So supply available or a supply to which we are going to connect our bulbs and the voltage mentioned on the power rating, are the two things same or they may be different also? Sir, equipments are designed to to some voltage variation also, to some band we are providing it. Sir, I have not seen exactly the ratings of this, to which band it is extended, sir. Okay. Suppose we have a capacitor, parallel plate capacitor. Do you know parallel plate capacitor? Yes, sir. We insert a dielectric slab within the plates. So you tell me the effect on potential difference, on charge, all these things. Sir, firstly, if there is air air is a dielectric in between capacitors, then if same voltage is applied across the plates, means Q is directly proportional to V for capacitance. So Q is equal to C into V. If we put dielectric, then for same voltage, charge will increase. Charge storage will increase. Okay, and if supply is not connected, it is isolated. It has some charge. It has some charge on its plates, and we insert a dielectric. Then what will be the effect on potential difference? It will remain same or it will change? Charge storage is also already there, and voltage is it is isolated, means charge cannot be transferred. So I'm not sure about that, sir, but if you allow me, I can answer. Okay. Sir, it is there is no part to discharge, means Q is constant, and if you put a dielectric slab, then capacitance will increase. So voltage maybe decrease. I'm not sure. Okay. Okay, tell me what is a super capacitor? Sir, I've heard about that, but I'm not exactly knowing what is it. You have heard about super capacitor? Yes, sir. But you don't have any idea? No, sir. Yes, sir. Okay.
What does an EMI filter do? Sir, I'm not able to answer this. Have you heard about EMI filter? No, sir. Okay. Other than technical, so in what areas do you have your interest? Sir, I like to do painting in my free time. Okay, only painting. Sir, other than that, I like doing journaling. Okay. One question. Do you know Karch Strait Bridge? Where is that? KERCH, Karch Strait Bridge. What is the I have location? heard about Karch Strait, but I'm not knowing exact location. I forgot exact location. No idea. Okay. Do you know about a country, Ukraine? Yes, sir. So tell me names of some countries which are neighbors of Ukraine. Sir, Belarus, Moldova, Poland, Russia. Sir, as far as I recall these countries. Okay. CRO. What is the full form of CRO? Sir, it is cathode ray oscilloscope. Okay. So input impedance of CRO is of what range? Sir, it is very high, but I am not able exactly knowing the range. Okay. So you like painting. Yes, sir. Mostly we have heard that this painting cost 1 crore, 80 lakhs. There are very many expensive paintings we have heard. So you tell me about the painting about which you know the most expensive one. Sir, exactly I'm not knowing, but I have heard about Mona Lisa painting. So how much it cost? So I'm not knowing about its cost. So what is objective behind painting? What do you want to get from that? We do everything to get something from that. So what do you want to get, or what do you get from this activity, painting? Sir, basically painting I do to refresh my mind. Sir, it gives me happiness when I do coloring and painting and sketching. It will give me means good observational skills. Because in painting or sketching, we need to draw a minute lines, or we have to see minute differences. Suppose you are not selected for this job, then what is your plan? Another plan? How will you proceed in life? And sir, I will again try for the next year. Sir, Okay. and I am confident that I will get it. And suppose you don't get, then what is your plan? Did you make any plan for backup plan? Yes, sir, I have plan B also. I will apply to some other jobs also, and I am also selected to some services. Okay. But my main aim is to join engineering services, and I am confident that I will get, not now, but later I will get it. Indian Railways has changed its recruitment policy through engineering services exam, right? Now they are not recruiting. So how it affected the electrical engineers? Sir, railway is considered as one of the best services for electrical engineers. Although Central Power Engineering Services is also good, and if any electrical engineer want to get into the railways, then he or she can appear in civil service exam. Okay. Okay, Rajiv sir. Okay, Shobna Singh. Yes, sir. Okay. What are your favorite subject? Sir, my favorite subject is power electronics and electrical machines. Power electronics and electrical machines. Okay, you have done your project on solar panel. Yes, sir. Okay. So, your part was only fabrication or modeling. Sir, it was a study, basically. Uh,
on the topic feasibility analysis of solar DC nanogrid for off-grid rural India. Okay. Okay. So what do you look? What are the power electronics components that you have used in your project? Sir, I have not made hardware, sir. Okay. So you have gone through this, no? Or you have just only do the study? Sir, I have done study and some simulations, basic simulations I did. Okay. Tell me one thing. When we talk about the thyristors, SCR play the important role. Why it is so? Sir, because SCRs, that is silicon control rectifiers, are widely used. So sometimes, most of the time, we rename it as thyristors because it is one of the most important device. Okay. How G Yes, Sobna? Sir, your voice is breaked, sir. I have not heard the question. When we compare GTO with the SCR, Sir, your voice is not audible. Hello? राजीव आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ा. Okay, Sobna, your favorite subject electrical machine and Power electronics. Sobna, I'm audible now. Sir, little breaking voice. Sir, voice is little breaking. That is breaking. Now it is fine. Yes, sir. Okay, when we compare GTO with the SCR, Sir. when we compare GTO with the SCR, what are the differences? Sir, when we compare GTO with HCR, first GTO has low reverse voltage blocking capability as compared to that of HCR, and it requires high gate current to turn on GTO as compared to that of HCR. HCR switching on is controlled by gate pulse, but GTO switching on and switching off is controlled by gate pulse. So that is how we can differentiate between the two. Okay, Sobna, if we have a two thyristor, one of NPN and another one is PNP, how we can design the GTO? Sir, if we have two transistors, thyristor. Sir, I'm not aware of it. Okay, tell me something about the SMPS. How SMPS work? Sir, SMPS is abbreviated of switch mode power supplies. And in that, we first convert alternating supply to DC supply. And after that, we use filters. And after that, we use transformers. Basically, these are isolated buck boost or buck converters. And after that, we get a regulated supply voltage. Okay, if I sells SMPS to some area of application, where it is generally used? So switch mode power supplies is used in computers. Sir, I have no classification. Any other area? So what is the prime purpose of this SMPS? So what is? What is the output? What is the output that we get from the SMPS? Sir, DC output. DC output. Is it generally to 20 volt or 24 volt? The 24 volt. Okay, right. Okay, so now when we talk about this power electronics,
one thing that comes in our mind is the implementation of rectifier and inverter. Rectifier and inverter. Okay. So tell me one thing: how this rectifier uh, is different from the inverter, and how this inverter is different from the cycloconverter, and how this cycloconverter is different from the chopper. Sir, Here, hmm, sir, basically, rectifier and inverter have some differences. Rectifier is used to convert AC supply voltage to DC, and whereas inverter is used reverse, means DC supply voltage to AC supply voltage. From device point of view, SCR is used in most of the applications in rectifiers, whereas in inverters we use an RCT or SCR in anti-parallel with diode. And sir, application point of view is also different, because if rectifier we can use to operate DC motors, and inverters we can use to operate induction motors. And okay. sir, cycloconverter Hmm. is Yeah, go basically on, go on. AC to AC voltage controller. Means we AC to give AC. AC supply voltage, and output we get AC supply voltage. It is fixed AC or variable AC. The output that we get. So variable frequency we get from And cycloconverter. in the chopper, what we get? Fixed or variable? So variable DC output voltage we can get. Okay, what is the need of this variable DC output? Sir, different applications require different DC voltage levels. So that is why we need variable DC output voltage. Okay, one equipment that has been recently found, that is modular multi-level inverter or converter that we talked about. What so how does it work, and what is the application of this modular multi-level converter? Sir, I have heard about multi-level converter, but I have not heard about modulated multi-level converter. Okay. Okay, when we talk about the compensation, the two compensation that comes in our mind, the series compensation and shunt compensation. Okay, in the AC transmission line, in the flexible AC transmission line. So, how this actually work, and what are the norms that we are using for this series compensation and shunt compensation? Sir, series compensation and shunt compensation. In Sir, the case of flexible AC transmission system. yes, sir. So basically, series compensation work is to inject voltage in series to the line to control reactive power flow in the transmission line. Whereas in shunt controllers, we inject voltage in the transmission line to control reactive power. Okay. Okay. So my last question from my side: what is lightning, and how does actually lightning occur, and how this related with the Wilson theory? Sir, lightning I know. Sir, water is evaporated and it goes up to higher. Lightning. I asked about the lightning related with the Wilson theory. Sir, I am not aware of Wilson theory. So now listen. देखो क्या है कि तुम्हारे टेक्निकल समहाउ जितना तुमने पढ़ा है इट इज गुड, पर कुछ एरिया में तुमको काम करना पड़ेगा, जैसे कि इंटरव्यू तुम्हारा 12th को है ना? यस सर। हाँ, तो जैसे तुम्हारे प्रोजेक्ट पे जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे वो तो है, उसको मैंने टच तो किया नहीं है। उसके अलावा जो भी ये सब रिसेंट एडवांसमेंट जो हो रहे हैं इक्विपमेंट के बारे में, और तुम्हारी देखो क्वेश्चन इन डेप्थ ज्यादा नहीं आएंगे, मतलब तुम्हारे जो तुमने एमटेक किया है उसके क्वेश्चन वहीं से आएंगे, और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी तुम तो हो सकता है कि वो इन्वर्टर और ये और
मतलब एरिया ऑफ इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, ये है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में और इम्प्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ। सर आपकी आवाज कट रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अभी आवाज आ रही है? सर ठीक है, थोड़ी ठीक है, बीच में कट रही है। ओके, लेटर आई विल गिव यू। विजेंद्र सर, हाँ, शोभना सर आपको वैसे फीडबैक दे देंगे, ठीक है। ओके सर। देखो, मेरा आपको फीडबैक है, जो चीजों को आपको थोड़ा सा वो करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने पूछा था पीक लोड और बेस लोड के प्लांट कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। उसमें डिसाइडिंग फैक्टर आपको बताना, वो क्या होते हैं वो नहीं बताना, ठीक है ना। डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि पीक लोड प्लांट को हम इमीडिएटली स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, तब हो सकता है, ठीक है ना। ये थर्मल पावर प्लांट है, बेस लोड प्लांट होते हैं, इनको स्टार्ट करने में 1 से 2 दिन लगते हैं, तो उनको इमीडिएटली ये कंटिन्यूस लोड पे चलते हैं, इसलिए इनको बेस लोड प्लांट बोला जाता है। और आपके जो अपना इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड क्या बोलते हैं सोलर, ये क्या बोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो होते हैं वो पीक लोड प्लांट होते हैं, ठीक है ना। तो इनको इमीडिएटली ऑन ऑफ किया जा सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, कैन सोलर प्लांट कैन बी पीक लोड प्लांट। अब मेरे को दोनों का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, अब मेरे को बताइए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नया, ठीक है। सर पीक लोड प्लांट की तरह यूज कर सकते हैं हम उसे, सोलर को, सर, क्योंकि हम उसे इमीडिएटली स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। अब देखो यही इसकी में क्लू था कि इसको बेस लोड प्लांट बनाया जाता है, क्योंकि सोलर एनर्जी तो हमें कंटिन्यूस मिल रही है, अगर वो यूज नहीं होगी तो वो वेस्ट है, ठीक है ना। कंटिन्यूसली मिल रही है, यूज नहीं होगी तो वेस्ट है। और पीक लोड हमारा क्या आता है, अर्ली मॉर्निंग आता है या इवनिंग में आता है, ठीक है। तो वहां पर हम इसको यूज कर नहीं सकते। तो जो आपका सोलर पावर प्लांट होता है वो भी बेस लोड प्लांट है, ठीक है। क्योंकि उसमें हमें स्टोरेज करना होता है, इसलिए। नहीं नहीं, वो कंटिन्यूसली एनर्जी, इतना स्टोरेज नहीं बना, ऑनलाइन बनाते हैं। इतनी एनर्जी को स्टोर करने के लिए बहुत बड़ा बैटरी बैंक चाहिएगा, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए ऑनलाइन सोलर प्लांट बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, और वो बेस लोड के ही होते हैं, ठीक है। इसके पीछे रीजन यही है कि जो एनर्जी आ रही है वो अगर यूज नहीं करोगे तो वेस्ट हो जाएगी, अनलेस आप उसको स्टोर नहीं कर रहे, और स्टोरेज में बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए वो नहीं होता, ठीक है। ओके सर। बेस लोड प्लांट है ये। अब मैंने पूछा था सोलर ग्रिड के बारे में, ठीक है ना। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। सोलर ग्रिड था बेसिकली, इस कंटेस्ट में बोला था कि तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पे सन हमेशा निकला हुआ है, ठीक है ना। अगर आसपास के कंट्रीज आपस में सोलर ग्रिड कनेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, अगर अभी इंडिया में सन निकला हुआ है तो वहां पे हम सप्लाई यूज कर सकते हैं, जितने भी ईस्ट में वेस्ट में हमारे कंट्रीज है, ठीक है ना। जब हमें जरूरत है तो हमारे से जो वेस्ट में कंट्रीज है उनकी सोलर एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। तो आपस में सोलर ग्रिड के थ्रू कनेक्ट करना, यानी कि सोलर एनर्जी के ग्रिड को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि हर समय पावर अवेलेबल रहेगी सबके पास, सोलर की पावर, ठीक है ना। तो सोलर ग्रिड उस कंटेक्स्ट में बोला गया। ये पढ़ लेना एक बार सोलर ग्रिड के बारे में, ठीक है। यस सर। नेट पे सर्च करोगे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। जो वोल्टेज लेवल है अभी जो है इंडिया का वो हो गया 800। मैंने पूछा था हाईएस्ट वोल्टेज लेवल, ठीक है ना। मैंने एसी और डीसी की बात नहीं की थी। हाईएस्ट कितना है, 800 वोल्ट है वो डीसी का। जो आपने बताया 765 वो एसी का ही है, ठीक है। तो डीसी का तो है 800 वोल्ट, यस सर। ठीक है। और ये जो स्मॉल स्मॉल सर्किट्स होते हैं, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, कम्यूटेशन सर्किट, ठीक है। यस और सर। ये जो आपके सिंगल रेक्टिफायरिंग के वेव फॉर्म, छोटे छोटे सर्किट्स जो होते हैं वो जरूर बनवाएंगे आपसे, ठीक है ना। वो आपको बोल देंगे कि एक थायरिस्टर लगा हुआ है, उसमें इंडक्टिव लोड है, कर्व बनाइए आप, ठीक है। वो आप तो देख लेना, वैसे तो आपने प्रैक्टिस किया होगा क्योंकि आपको पावर इलेक्ट्रिसिटी का तो वो है, तो उसमें
हो चुका होगा। ठीक है, वैसे आपका प्रेजेंटेशन ठीक है, और आप जबलपुर से है, एमपी से है, तो कूनो नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जहाँ पे अभी चीते आए हैं। ठीक है, यस सर। कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ पे है, कितने एरिया में है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। यस सर। ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, पिछले बार मुझसे पूछा गया था, जैसे कि हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, उसमें हम न्यूट्रल किस तरीके से, जो रिटर्न पाथ होता है वो कैसे प्रोवाइड करते हैं? देखो, हाँ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर में न्यूट्रल, ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर में तो जो न्यूट्रल का तो प्लस और माइनस हो जाता है। ठीक है ना, हेलो, यस सर। रेक्टिफाई कर रहा है तो वो प्लस है और माइनस है, तो पॉजिटिव साइकिल ही आएगा लोड की साइड में, और निगेटिव साइकिल में वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो प्राइमरी साइड में आपका डीसी वोल्टेज ही रहेगी, डीसी करंट रहेगी। यस सर। ठीक है ना, तो वहां पर रिटर्न पाथ कुछ नहीं होता उसमें, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर यूज नहीं किए जाते, केवल छोटे सर्किट्स में यूज किए जाते हैं। सर इसमें रिटर्न पाथ नहीं होता है? आप फिर समझे नहीं बात को। देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, ठीक है ना, लोड के अक्रॉस। ठीक है, यस सर। और उसमें वो डीसी सप्लाई होगी, तो उसमें प्लस और माइनस हो गया। यस सर। यस सर। तो प्लस से पॉजिटिव साइकिल में आया, और वो सेकेंडरी वाइंडिंग में चला जाएगा सब, उसके साथ रिटर्न पाथ उसी का है। लेकिन प्राइमरी में आप अगर उसको वो न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, उसमें तो न्यूट्रल कोई की जरूरत ही नहीं है, तो केवल करंट जो फ्लो करेगी वो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में फ्लो करेगी। यस सर। करंट जो फ्लो करेगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में फ्लो करेगी। सो रिटर्न पाथ की जरूरत नहीं है इसमें? रिटर्न पाथ की ग्राउंड रिटर्न होता है क्या सर इसमें? ग्राउंड रिटर्न की तो जरूरत ही नहीं है। ग्राउंड मतलब जो निगेटिव है वही आपका रिटर्न पाथ होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल से निगेटिव उसमें। ठीक अच्छा। है, अब फुल वेव बनाओगे तो क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर बनाओगे तो आप क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर बनाओगे तो आप उसमें क्या होगा कि उस पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी करंट जाएगी, और निगेटिव हाफ साइकिल को भी पॉजिटिव कर दिया हमने, उसमें भी यूनिडायरेक्शनल करंट हो जाएगी। और हमारा लोड साइड में अल्टरनेटिंग करंट, सॉरी ट्रांसफार्मर साइड में अल्टरनेटिंग करंट रहेगी। ठीक है, देखो, जो घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टर्म्स है ना, एक तो उनके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। ठीक, तो घर में एमसीबी के बारे में बन सकते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के एमसीबी जो हैं। रिले के बारे में क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, इस किसी भी इंटरव्यू में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चांस रहते हैं बनने के, इन पे कमांड रखनी है। और पावर कैपेसिटी है इंडिया की, उसमें जो जो चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, उन सब के बारे में थोड़ा अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, और पावर रेटिंग के बारे में जैसे मैंने पूछा, तो पावर रेटिंग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, वीए रेटिंग जो है, केवीए रेटिंग, ये सारी रेटिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का तो काफी यूज होता है ना, चार्जिंग में, बैटरीज में, हर जगह। तो ये कैपेसिटर का कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक से क्या फर्क पड़ता है कैपेसिटेंस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। इसमें कंफ्यूजन था तो उसको दूर करना है तुम्हें अपने। कैपेसिटर, इंडक्टर, रेसिस्टर, तो तीनों के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो हर चीज के। यस सर। उसके अलावा सुपर कैपेसिटर जो है ना, आजकल बहुत ज्यादा हाई कैपेसिटी के कैपेसिटर बन रहे हैं ना, तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जैसे कि बैटरी बननी है फास्ट, बहुत जल्दी चार्ज करने वाली, ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाली, तो उसमें सुपर कैपेसिटर का यूज हो रहा है, अल्ट्रा कैपेसिटर का। इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए। सर। ठीक है, ग्रेफीन सुपर कैपेसिटर जो है, कार्बन की जगह ग्रेफीन यूज हो रहा है आजकल बहुत ज्यादा कैपेसिटर्स में, इलेक्ट्रोड्स में, तो उसका पता होना चाहिए। अगर वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगे कुछ भी, तो उसमें यहां से भी बन सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिल्टर के बारे में पढ़ लेना एक बार, क्या होता है ईएमआई फिल्टर। यस सर। ठीक है, जो ग्रिड पावर है ना, उसके नॉइज को सप्रेस करने में यूज होता है। और जो कर्च स्ट्रेट ब्रिज मैंने पूछा था, तो अभी 2-3 दिन पहले ही बड़ा तगड़ा ये इवेंट हुआ है, मतलब
जिसमें रसिया ने जो क्रीमिया के और रसिया के बीच में बहुत बड़ा एक ब्रिज बनाया हुआ था, वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। हाँ, तो ये न्यूज है ना, तो ये ब्रिज का नाम क्या है वो तो आ सकता है ना माइंड में, यूपीएससी में थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस भी तो चेक करी जाती है ना तुम्हारी। सर 2 ही दिन से न्यूज नहीं देखी थी। हाँ, तो पढ़ लेना इसको, कर्च स्ट्रेट ब्रिज को, कितनी लंबाई थी इसकी, क्या इसका सिग्निफिकेंस था, रसिया के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि क्रूड ऑयल का जो लाने का रास्ता भी था ना इसी के थ्रू, तो अगर ये डिस्ट्रॉय हुआ है तो उससे फर्क पड़ेगा ना उसके मूवमेंट पे बहुत ज्यादा, तो ये कहीं ना कहीं हमें भी अफेक्ट करेगा, इंडिया को भी, राइट। यूक्रेन की वार चली रही है, उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन बन सकता है अवेयरनेस चेक करने के लिए। इनपुट इम्पीडेंस सीआरओ की 1 मेगा ओम की होती है लगभग। यस सर। तो ये जनरल चीजें, बेसिक चीजें, उनको भी दिमाग में रखना है। करंट में जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं थोड़ा सा उनके बारे में भी नॉलेज रखो, कुछ जनरल चीजें पूछ लेते हैं, तुम्हारे सिलेबस में भी रहता ही है ना जीएस, एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें, तो उनके ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, बाकी ठीक है, प्रेजेंटेशन कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। बाकी अब तुम्हारा वहां पे कैसे तुम आंसर करोगे, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पर ही डिपेंड करेगा सारा। सर वो कैपेसिटर वाला आंसर मेरा सही था कि गलत था? क्या उसमें वो था ना कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं था ना, इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा ना, तो Q इक्वल टू सी भी है, चार्ज तो सेम है, आइसोलेटेड है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा ना। V इक्वल टू Q अपॉन C है ना, C बढ़ रहा है तो V कम होगा सिंपल। सर पर कॉन्फिडेंस नहीं था, दिक्कत ये है। हाँ, तुमने कहा ना मे बी, तो इसलिए बता रहा हूँ, क्लियर बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल। चलो ओके, ऑल द बेस्ट। एक बार दोनों सर से कॉल करके ले लेना फीडबैक। ओके सर, थैंक यू सर।